Good morning, friends. Welcome to my educational YouTube channel, Master Nursing Classes. Myself, Mr. Nagraj, working as nursing officer in AIMS. So, this channel purpose is to help the NORCET aspirants who all are struggling to clear their exams and clear those concept and topics which all are very much necessary for the NORCET examination purpose. Here I am dealing the topics of the NORCET, which includes the three syllabuses, that is anatomy, physiology, and medical surgical nursing. So I am integrating these things where I am primarily telling related to the anatomy, physiology, and I am integrating those things with medical surgical nursing and the important part of the pharmacology also. So here uh, primarily we will create the base for this everything, where we will understand easily further all complicated and difficult topics very easily. Okay, so I'm once again welcoming you all to my educational YouTube channel, that is Master Nursing Classes. Please do uh, subscribe, like, and share this video. Okay, so without delay we will start this our topic with one beautiful motivational quotes. That motivational quote says that today's experts are once से beginners. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स, ध्यान में रखना। जो भी आज एक्सपर्ट्स बना है, जो भी आज नाम कमा के रखा है, अच्छा से धन कमा के रखा है, जो भी कमा के रखा है, वो एक टाइम पे बिगिनिंग किया था, जीरो से स्टार्ट किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ही टाइम पे सब कुछ नहीं होता, उसको हम धीरे धीरे से अच्छे से स्लोली बिल्ड करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसके साथ में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि हम थोड़ा एक्सपर्ट बन जाए। ठीक है, सो जो भी आज एक्सपर्ट्स है वो एक टाइम पे बिगिनर्स थे। इसलिए दोस्तों डरना नहीं, आप खुद के ऊपर बिलीव रखना, आपका कंसिस्टेंसी फॉलो करना कि नॉर्सेट नहीं, जीवन में जो भी आप एग्जाम चाहते हो वो हो जाएगा। ठीक है, उसमें नॉर्सेट क्या बड़ी बात है। चले हम चलते हैं हमारी टॉपिक, that is before studying the central nervous system. I want to give an blueprint where we will studying this central nervous system in different parts. Okay, so I have classified the nervous system for easy study purpose here. Nervous system is primarily classified as a central nervous system. Okay, central nervous system and peripheral nervous system. So central nervous system in short term we will say CNS also. जो भी नर्वस सिस्टम हमारा बॉडी का सेंटर में है, तो ब्रेन हो गया, स्पाइनल कार्ड हो गया एंड ब्रेन स्टेम हो गया, ये तीनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम के में आते हैं। एंड जो भी हमारा बॉडी पार्ट के साइड में है, मतलब पेरीफेरी में है, उस नर्वस सिस्टम को हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल एक्सिस, बॉडी का सेंट्रल एक्सिस पे नहीं है, उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो हमारा बॉडी का सेंट्रल एक्सिस पे है, उसको बोलते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो मैंने बता दिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेन दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। नेक्स्ट हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे पहले इसका बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद में इन डिटेल ऑफ द ब्रेन एंड इन डिटेल रिगार्डिंग स्पाइनल कार्ड पढ़ेंगे। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम दो पढ़ते हैं, जो हमारे कंट्रोल पे है उसको बोलते हैं सोमैटिक नर्व सिस्टम, और वॉलंटरी नर्व सिस्टम जो हमारे कंट्रोल पे नहीं है उसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम, जो ऑटोमेटिकली काम करेगा। जो हमारा कंट्रोल में नहीं है उसको बोलते हैं इनवॉलंटरी नर्व सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। ठीक है, ये वेरी बेसिक है, आपने भाई आपका 12th में भी पढ़ा होगा कि ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम में हम फर्दर डिवाइड करके पढ़ते हैं सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। ये समझे तो आपका मतलब फार्माकोलॉजी का आप आधा हिस्सा समझ जाते हो उधर।
जैसा आपका सिंपैथोमिमेटिक्स काम करता है, जैसे पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स, एड्रेनर्जिक्स, कोलिनर्जिक्स, ये सबको समझना है तो ये नर्वस सिस्टम का बेसिक को समझना बहुत ही जरूर है। ठीक है। मैंने बता दिया। पहले पहले हम बेसिक्स ऑफ दी नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम है न्यूरॉन। उसके बारे में उसका सपोर्टिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। बाद में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाएंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ब्रेन पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे। एंड उसके बाद में हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को जाएंगे, उसमें हम सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है। दोस्तों, ये नर्वस सिस्टम पढ़ने से पहला इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट पढ़ना बहुत जरूरी है, जो है न्यूरॉन। क्योंकि विदाउट नोइंग द बेस वी कांट मेक द बिल्डिंग। ओके। सो हम पहला बेस को समझेंगे, उसके बाद में हम बिल्डिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है। इधर मैं आपको एक कोरिलेशन करके बेस बिल्ड करने का ट्राई कर रहा हूँ, समझने का कोशिश करना। जो हमारा बॉडी है, जो हमारा बॉडी है, जो ये बॉडी कैसे बना है? ये क्या क्वेश्चन है सर? बॉडी कैसे बना है मतलब? बना है सारे ऑर्गन से, ऑर्गन सिस्टम से, टिश्यू है, ब्लड है, वो है। हाँ, इसको भी एक बेस है फ्रेंड्स। जो बॉडी बना है सेल से। किससे बना है बॉडी? सेल से बना है। ओके। ये जो सेल्स है, इस सेल से बॉडी बना है। ठीक है। ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, ओके, ये ग्रुप ऑफ सेल्स है। ये ग्रुप ऑफ सेल्स को बोलते हैं हम टिश्यू। ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। इट ग्रुप ऑफ टिश्यू फर्दर हो जाएगा ऑर्गन की। पकड़ के चलो, ये मायोकार्डियल सेल है, ये मायोकार्डियल टिश्यू है, ये ग्रुप ऑफ टिश्यू हो जाएगा आपका। वेरी नाइस। हार्ट, दैट इज कार्डियक। ओके। दिस इज एन, इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ टिश्यू को बोलते हैं हम ऑर्गन। ठीक है। क्या बोलते हैं? ऑर्गन। जो ये ऑर्गन के जरिए दूसरा ऑर्गन कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब एक कार्डियक के अलॉन्ग वैस्कुलर सिस्टम कनेक्ट हो रहे हैं, इसको बोलते हैं हम ऑर्गन सिस्टम। जैसे नेक्स्ट आते हैं हमारा ऑर्गन सिस्टम। ठीक है। कौन सा आते हैं नेक्स्ट? ऑर्गन के बाद क्या आते हैं? ऑर्गन सिस्टम। कि ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाया होता है? हमारा बॉडी। ठीक है। बॉडी बनाया होता है। ऐसे इधर हम नर्वस सिस्टम में क्या देखते हैं? जो नर्वस सिस्टम में हमको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हमने पढ़ा है कि सेल। ओके। सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी एंड ग्रुप ऑफ द सेल्स वी कॉल टिश्यूज। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस है। ग्रुप ऑफ द टिश्यू को हम बोलते हैं ऑर्गन। ग्रुप ऑफ द टिश्यू को क्या बोलते हैं? ऑर्गन बोलते हैं। जो ग्रुप ऑफ द ऑर्गन को ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। ऑर्गन सिस्टम पे हमारा बॉडी बनाया। ठीक है। बॉडी होगा। जैसे ही हम नर्वस सिस्टम को आए तो इसका भी एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है दोस्तों। जो इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, इसका जो सेल है उसको हम इसको स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। जो नर्व का सेल है उसको बोलते हैं हम न्यूरॉन। क्या बोलते हैं उसको? न्यूरॉन। ये जो न्यूरॉन है, ठीक है, ये न्यूरॉन 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 मिलके क्या होगा? नर्वस टिश्यू होगा। ठीक है। क्या होगा? नर्वस टिश्यू होगा। जो नर्वस टिश्यू से क्या बना है? हमारी पूरा नर्वस सिस्टम बना है। उसमें आते हैं हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना है। ओके। एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है, क्या आता है? ब्रेन भी कहाँ से बना है? नर्वस टिश्यू से बना है। स्पाइनल कार्ड भी क्या कैसे बना है? नर्वस टिश्यू से बना है। और हमारा ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम का भी पार्ट्स पूरा कहाँ से बना है? नर्वस टिश्यू से बना है। ठीक है। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों मिलके क्या होता है? नर्वस सिस्टम होते हैं। इसलिए हमको बेसिक जानना जरूरी है कि न्यूरॉन क्या होते हैं। ठीक है। तो न्यूरॉन के बारे में हम समझ लिया तो मतलब इफ वी गेट अंडरस्टैंड रिगार्डिंग न्यूरॉन्स मीन्स, so our entire nervous system study will get easy. Okay. So we'll go to the next slide, that is our type of the two type of the nerve cells. So we are having, like, I will take in
I will make one diagram for your easy understanding. This is our brain. Okay, this is our brain. This is our midbrain. This is pons, and here it comes our medulla oblongata. From medulla oblongata, it's our spinal cord. Okay, and here it comes our little brain, that is the cerebellum. Okay, जहाँ पे ये जो ब्रेन है इसमें बस न्यूरॉन ही नहीं है दोस्तों, इसके इसके साथ में इसका सपोर्ट करने वाला सेल है, उसको बोलते हैं हम सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो टू टाइप्स ऑफ द सेल्स कौन आते हैं, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ द सेल्स कौन कौन से आते हैं। एक जो जैसा सेल है उसको हम जब भी स्टिमुलाई दिया तो वो रिस्पॉन्स करेगा, जब हम जो भी इंफॉर्मेशन आए तो जो भी केमिकल मैसेज आए तो वो एक्साइट हो जाएगा। सो उसको बोलते हैं हम एक्साइटेबल सेल्स। क्या बोलते हैं, एक्साइटेबल सेल्स। ये एक्साइटेबल सेल ही होगा है दोस्तों हमारा न्यूरॉन, ठीक है, क्या है हमारा न्यूरॉन है। जैसा भी एक केमिकल स्टिमुले आएगा, एक जैसे भी केमिकल इंफॉर्मेशन आएगा, वो आने के बाद वो स्टिमुले होने के बाद भी वो एग्जाइट नहीं हो रहा है। एग्जाइट नहीं हो रहा है मतलब इसका मतलब है वो नॉन एग्जाइटेबल सेल है, ठीक है, क्या है, नॉन एग्जाइटेबल सेल है। जो नॉन एग्जाइटेबल सेल्स को हम बोलते हैं, नॉन एग्जाइटेबल सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड ग्लायल सेल्स। क्या बोलते हैं हम, ग्लायल सेल्स, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग सेल्स, ठीक है। जो न्यूरॉन है वो एक्साइटेबल सेल है, जो ग्लायल सेल से नॉन एक्साइटेबल सेल से। ग्लायल सेल्स के बारे में हम इन डिटेल में स्टडी करेंगे बाद में कि इसमें आते हैं कौन कौन से सेल्स, लाइक माइक्रोग्लायल सेल्स, इट एक्ट्स एज ए मैक्रोफेज इन द ब्रेन, and astrocytes which makes the blood brain barrier, and oligodendrocytes which makes the myelin sheath of the central nervous system, and epididymal cells which makes the cerebrospinal fluid in the central nervous system. We will study in detail in next slides. Okay, don't worry, don't get confused, just note that there are two kind of the cells as a nerve cells. There is excitable cells, we call those all are neuron, and non-excitable cells we call those all are glial cells. Okay, so first we will study regarding the neuron. Okay, neuron, what is the structure of the neuron, what is the function of the neuron, okay, and what all are the parts of the neuron, how the neuron will get receives the impulses, how it get transmits the impulses. So each and everything we will discuss in detail. Okay, so here it comes our beautiful structure of the neuron. Okay, न्यूरॉन को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये ऊपर वाला पॉइंट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। ओके, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। ये जो न्यूरॉन है इधर देख रहे हैं आप, न्यूरॉन पे 1 मिनट आई विल चेंज द कलर ऑफ द पेन। ओके, ठीक है, ये जो न्यूरॉन है इधर देख रहे हैं आप, डेंड्राइट बोल के लिखा है। ये सारे मैंने टिक मार्क कर रहा हूं, ये इसका डेंड्राइट्स है, इस न्यूरॉन का डेंड्राइट्स है। जहां सारे आकर कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, हमारा नर्व सेल का बॉडी को कनेक्ट हो रहे हैं, इसको बोलते हैं नर्व सेल बॉडी और सोमा। ओके, सोमा मीन्स सोमैटिक, सोमैटिक मीन्स सोमा मीन्स बॉडी। ओके, सो जो भी ये ब्रांच पार्ट है वो आके नर्व सेल बॉडी को कनेक्ट हो रहे हैं, उसको हम we call those all are dendrites. What is the function of the dendrite means the dendrites which receives the information, which receives the chemical messages, and which receives the impulses from another neuron to nerve cell body. You will get the questions, the part of the neuron which receiving the information, which bringing the information towards the nerve cell body is called dendrites. Okay, is called dendrites. And along with this you will get another one question, जो इंफॉर्मेशन इधर नर्व सेल बॉडी पे आए वो अनदर न्यूरॉन को ट्रांसमिशन हो रहे, कैसे हो रहे, मतलब उसका रोड क्या है, उसका रोड है एक्सॉन। जो इंफॉर्मेशन नर्व सेल बॉडी में, द इंफॉर्मेशन विच इज प्रेजेंट इन द नर्व सेल बॉडी विच इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम दिस न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन थ्रू एक्सॉन।
the information which is carried out from the nerve cell body towards the other nerve cell. From nerve cell body towards the other nerve cell means it's transmitting the information. Okay, it's dendrite is receiving the information, dendrites is receiving the information, and the axon is transmitting, and it's carrying and it's forwarding the information. That is called axon. Okay, so here it comes your beautiful structure of the axon. I am marking here. Okay, with different pen I will mark. So 1 minute. So here it comes the axon. So this the gap. These all are axons. Actually, axons will run like this. On the axons, you are having the myelin sheath. Okay, I will tell the information regarding myelin sheath also here. So this is our axon. Okay, so this axon which carries the information from nerve cell body and which transmits the information to the another nerve cell. Okay, so that is called axon. You will get one question here, where the axon is get connecting to the nerve cell body. That point is we call that is a axon hillock. We call that is an axon hillock. Okay, what is axon hillock? Axon hillock is the point where the nerve cell bodies get connecting with the axon. It's called axon hillock. Okay, um, next we will see regarding the myelin sheath. Okay, myelin sheath, these yellow color buttons you are seeing on the axon, those all are called myelin sheath. This myelin sheath in central nervous system is made up of the oligodendrocytes, and in peripheral nervous system which is made up of the Schwann cells. Okay, Schwann cells are also a cells which helps for the nervous system for myelination in the peripheral nervous system. Okay, so what is the function of this myelin sheath? We have seen that myelin sheath in CNS is made up of the oligodendrocytes, and myelin sheath in the peripheral nervous system is made up of the Schwann cells. What is the function of this myelin sheath? Function of myelin sheath is that whatever the information which receives from the another nerves, which need to transmit to the another next nerves. So in order to speed up the information, these axons will help to jump the information in axon, so it will get transfer easily to the another neuron. Okay, it will get transfer easily to the another neuron. This jumping of the information, this jumping of the information in the axon, we call this as an saltatory conduction. We call this as an saltatory conduction. Okay, saltatory conduction. So damage to these myelin sheath will leads to the slow transmission of the information, and good function of the myelin sheath will leads to the fast function of the nervous system. Okay, so here we will study one disease in multiple sclerosis as a demyelination of the central nervous system, where we will getting the loss of the saltatory conduction. Okay, will where we will see there as a loss of the saltatory conduction, and entire body functions will get slow there. Okay, entire body function will get slow there in case of it get damaged means. Otherwise, if it is good means the entire body function will get fast. Means entire body function means nervous system function. Okay, this is the brief I have explained regarding the dendrites which receives the information, axon which carries the information from nerve cell body to a next neuron, and myelin sheath which helps for the speed transmission of the information from one nerve cell to another nerve cell. And we have studied regarding the axon hillock, where this axon is getting connected with the nerve cell body, and we have seen that the myelin sheath and the cells which are responsible for formation of the myelin sheath in central nervous system is oligodendrocytes. The cells which are responsible for formation of the myelination in periphery is the Schwann cells. Okay,
So without delaying, we will go for next slide, that is the synapse and synaptic cleft. Always you people would get confused the difference between those two words. Okay, what is the synapse, sir, and what is the synaptic cleft? What is the cleft meaning? Okay, it is very simple. This is the These all are separate two neurons where I am explaining. This is the end part of the one neuron, that is the axon, which is bringing our information from here. It will get transposed to another neuron, that this one. Okay, and this neuron part which receives the information, that is the dendrite. Okay, so the axon is getting the information from nerve cell body, either from the nerve cell body or from the nerve cell body, and giving information to next neuron. And this dendrite is receiving the information from the axon of the other nerve, and it's going towards the nerve cell body. Okay, it's going towards the nerve cell body. So there is junction between these two neurons. Okay, there is junction between these two neurons. This junction we call the synapse. Okay, this junction we call the synapse. Synapse is a junction between the two neurons, is called synapse, and there is a gap between these two neurons. Okay, there is a gap between these two neurons. This gap we call the synaptic cleft. Okay, synaptic cleft in the sense it's a gap between the two nerve junction is called synaptic cleft. So in pediatric, while studying the congenital anomaly of the lip and face, so you will study there a cleft palate and cleft lip. If there is a gap in the lip, that is called cleft lip. If there is any gap in the palate, that is called cleft palate. Okay, so here the simple meaning of the cleft is gap. Okay, gap is the simple meaning of the cleft. And from one neuron to another neuron, the information is carrying over here. So what all are the things which are responsible to transmit the information in the this junction is these chemical structures, these dot structures we call the neurotransmitters. Neurotransmitters are the chemicals that transmits the information between the two neurons. Okay, between the two neurons, it's transmitting the information, that is called as the neurotransmitters. Okay, I hope you understand the difference between the synapse and synaptic cleft. The junction between these two neurons is called synapse, and the gap between these two neurons is called synaptic cleft. Okay, synaptic cleft. Next we will move to next slide. Okay, here it comes to very important points for the NORCET. So already discussed points. So I will highlight once here. The structural and functional unit of the nervous system is called neuron, and part of the nerve which receives the information is the dendrite. Part of the nerve which sends or which transfers the information is the axon. Okay, and the part of the nerve which speed ups or which conduct or insulinate. मतलब where you are while transmitting the information to exam, so the speed of transmission is getting increased because of the myelin sheath. Okay, myelin sheath. The structure which helps for the speed up is myelin sheath. Okay, so this myelin sheath in central nervous system is made up of this myelin sheath in CNS is made up of the oligodendrocytes. This myelin sheath in the peripheral nervous system is made up of the Schwann cells. Okay, Schwann cells. And the gap, this is also one very important point. So we have studied, see, I will make one simple diagram of the axon here. Sorry, I am explaining regarding the node of Ranvier. Okay, node of Ranvier, what it exactly means. This is our axon, where we are having this myelin sheath over the axon here.
Those yellow color buttons on structure you have seen, that is the same, this myelin sheath. So this myelin sheath, there is a gap between the two myelin sheath. This is what we call the node of Ranvier. Okay, this is what we call the node of Ranvier. Okay, the gap between two myelin sheath is called node of Ranvier, and the gap between the two nerve junction is called synaptic cleft, and the junction between the two nerves are called synapses. Okay, it's very easy topic. Okay, uh, this is what we have studied regarding the myelin sheath and its formation in CNS and PNS. Next, we will go for the type of the neurons. Neurons we have classified simply on two types based on their poles and based on their functions. So, it's very easy. Only we have to break the words here. Based on the poles means this is the nerve cell body and this is the pole of the neuron. Okay, this is the nerve cell body. This is the poles of the neuron. Okay, simple. You see. This there is one nerve cell body and one pole. Okay, here is the one nerve cell body, two poles means it's bipolar. One nerve cell body and one pole means it's unipolar. Simple meaning of the uni is uni in the sense one, bi in the sense two. Okay, multi in the sense more than two. Okay, very simple. So the nerve cell body which is having only one cell body plus one axon means that is called unipolar. If the nerve cell is having the one axon plus one dendrites means two separate poles. Two poles if it is having means it is the bipolar, and if it is having the more than two poles, see this is our nerve cell body and it's having the many poles here. Okay, more than two poles, that is called more than two poles are there means that we call the multipolar neuron. Okay, and what is this middle one, sir? Third one, this is pseudo unipolar. Pseudo means what is the meaning of this pseudo? Wherever in the medical terminology pseudo comes means, wherever pseudo comes means it's in false. Okay, false. It's not actual. Pseudo unipolar is it looks like unipolar. Okay, here it is the one nerve cell body and here it is the one pole, but these are separate two poles. It looks like unipolar, but it's not an unipolar. That is called as the pseudo unipolar. Okay, that is called as the pseudo unipolar. These cells present in our eyes as a cone cells and rod cells. Okay, we'll study this one in detail next. Okay, so these are the types of the neuron based on the poles. We have four classification, that is unipolar, single pole neuron, bipolar, two poles neuron, multipolar, more than two poles in neuron, and pseudo unipolars. Okay, so based on the function of the neuron, we have classified the nerves in two forms, that is the sensory neuron and motor neuron. See, I will create one beautiful example here. Uh, See, this is your hand. Consider this is your hand. Okay, so okay, you are get pricked with one sharp object to your hand. Okay, this information is carried through one nerve towards the central nervous system. Okay, towards the central nervous system. What is this? If you get pricked with one sharp object means you will get pain here. Okay, pain here. That is the sensation. Means the sensation is carried by the sensory nerve. Okay, that sensation is carried by the sensory nerve. You are carrying this information towards the central nervous system, and in your central nervous system there is processor that processes the your information
and which sends back information towards the your side of the action. Okay, so this nerve which is carrying the information from CNS towards the site of action, that is called motor nerve. Okay, this is called motor nerve. And the nerve which carrying the information from the site of action or from the site of impact towards the central nervous system is called sensory nerve. Okay, this is called sensory nerve, which is carrying the information in upward direction. So we call this is an apparent nerve. Okay, we call this is an apparent nerve, and which is bringing information from brain to downwards. So this is, we call this nerve as an apparent nerve. Okay, same motor nerve is same mode of the apparent nerve, and sensory nerve is same mode of the apparent nerve. So where, sir, we are getting confused how we will remember. Means remember on mnemonic, same. Okay, sensory nerve means apparent nerve, motor nerve means apparent nerve. Okay, it clear? Sensory nerve is apparent nerve and motor nerve is apparent nerve, both are same. I hope you understood. So based on the function, nerves are divided in sensory nerve and motor nerve. So sensory nerve also called as apparent nerve, motor nerve also called as apparent nerve, and sensory nerve which carries the sensation from periphery to brain. Okay, or periphery to the central nervous system. Okay, and the motor nerve which is also called as apparent nerve, which carries the information from brain or central nervous system to periphery. Okay, central nervous system to periphery, that is called motor nerve. Hope you understood this one. In order to very easily clarify this, we will study one topic, that is the reflex arc. What all the things will come in reflex arc, I will explain. See, this is one sharp object is getting pricking here. So here there is a receptors which receiving the pain signals, pain sensation here. So if those all are pain receptors, means those pain receptors we call those are nociceptors. What we call those are nociceptors. Okay, pain receptors are also called as nociceptors. So this pain sensation is carried by this particular nerve. Okay, this blue color particular nerve, which is carrying the information from your periphery body part towards the your central nervous system. Okay, towards your central nervous system, there is a spinal cord. So this is the dorsal part of the spinal cord, means back part of the spinal cord. Okay, this is the ventral part of your spinal cord, means this is the frontal nerve, front part of your spinal cord. Dorsum means back and ventral means front. So in order to easily understand, this is my hand. So this back part of my hand is called dorsum of my hand. Okay, and this is my front part of the hand. This part of the hand we call ventral part of the hand. Simple. Here also in spinal cord, back part is we call so dorsal part, and back is called dorsal part, and front is called ventral part. Okay, front is called ventral part. So जो भी sensory nerve होगा, okay, that will enter to the central nervous system by our dorsal part of the nerves. Okay, dorsal part of the CNS. Okay, so sensory nerve always comes from the dorsal part. Okay, sensory nerves also called as apparent nerves. Okay, and in this central nervous system it will get processed, and that signal will get processed, and the central nervous system sends information to that particular muscle. If you are getting pricked here, so you have to remove back your hand in order to safeguard. Okay, आपको इधर प्रिक किया है, उधर आपको पेन हो रहा है, आपको हाथ रिटर्न लेना है कि आपका पेन कम हो जाए. ये जो रिटर्न हो रहा है मतलब रिटर्न आ रहा है मेरा हाथ, जो मूवमेंट हो रहा है मतलब मोटर एक्टिविटी हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, उसको रिस्पॉन्सिबल कौन सा नर्व है? ये है हमारा मोटर नर्व, इसको ये बोलते हैं हम एपरेंट नर्व. ओके, ये जो रिसेप्टर sensory nerve, first component is receptor, second component is sensory nerve, third component is our central nervous system, fourth component is my motor nerve, and
Fifth component is that particular site of action, site of action or effector muscle valve, also we can call. मेरे को इधर प्रिक हो गए तो मैं रिटर्न लेने के लिए मेरा बाइसेप्स मसल क्या होगा, कंट्रैक्ट होना पड़ेगा. सो कंट्रैक्ट हो रहा है, मेरा हाथ रिटर्न आ रहा है, सो इसको साइट ऑफ एक्शन हम बोलते हैं. ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स को मिलकर हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क. रिफ्लेक्स आर्क में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, आपका नॉर्सेट एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है. रिफ्लेक्स आर्क इंक्लूडिंग द रिसेप्टर, sensory nerve and or apparent nerve, central nervous system, motor nerve or efferent nerve. Then it comes the site of action or the uh, effector site. Okay, so this entire things we call as a reflex arc. These five components we call as reflex arc. Okay, next we will move. Okay, here it comes end of this today's topic. So tomorrow's next topic will I am going to discuss on the glial cell. So before going to discuss on the glial cells, I want to tell you regarding the gray matter. Okay, gray matter and white matter. Very important. Gray matter and white matter. So in tomorrow's class, I will tell regarding the gray matter and white matter in detail. Gray matter and white matter. So thank you. If the class is helpful for you, if you find the information is useful for you, please do subscribe my channel, share the information with your friends and with your classmates and with NORCET aspirants. So I am wishing you all the best for your exam preparation. Thank you.